Very good and happy morning to all of you. Welcome to Prebell with Team William in India. Let's start the fresh week with the Nifty's chart. See, as you can see over here, there has been a very good rally since the bounce from the 200 DMA after this one. Okay, but after once this rally started, so two things important to notice. We got a follow through day a little late. That was on the November 11th. But before that, we had crossed the previous rally high. Now, what's important now is last week तो पूरा consolidation में गया, ठीक है? If you can see over here, this is the last week. In fact, last 6 sessions, so there has been a very narrow range. सिर्फ 250 300 पॉइंट का मैक्सिमम एक रेंज था पिछले 6 दिन में, and you can see volume activity is also reducing. So now what's important is the levels that we discussed last time also. Firstly, the 10 EMA. So this pink line over here, where Nifty took a support on Friday and even before that on last Thursday. So that's the important level, which is the 10 EMA. ठीक है? और वो जो पूरा जोन है 10 EMA के आजू बाजू 20-25 पॉइंट आगे पीछे, so 200 to 250. So 200 to 250 का zone है, that is very important for the Nifty to hold on the downside. If we see that Nifty is able to hold that zone and rebound from there, so then the next level we'll be looking for is the high above 400 and then the new all-time high. ठीक है, इसमें sustain करके rebound होता है तो हम पहले 400 देखेंगे फिर 600. So these are some of the levels important on the higher side. On the flip side, if you see this 200 250 level getting breached on decent volume, जो मार्केट के लीडर्स हैं इंडेक्स को होल्ड करते हैं, वो लोग अपना गेन गिव अप कर देते हैं, then Nifty might test the psychological level of 18,000 or even before that the 21 DMA. So the green line over here is the 21 DMA. ठीक है, वो 18,050 के आसपास है. तो फिर अभी जैसे 200 250 का जोन है, फिर 18,050 का जोन एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा. सो वहां से पूरा 150-200 पॉइंट का सपोर्ट जोन निफ्टी में नीचे आ सकता है अकॉर्डिंग टू द दिस लेवल्स ऑफ द मूविंग एवरेजेस. सी नाउ पॉजिटिव आउटकम ऑफ द लास्ट वीक वाज कि एक तो after a good rally there was some consolidation which is always necessary. कोई भी रैली कोई रोज नहीं चलती, बीच में कंसोलिडेशन आना अच्छा है. अभी इसमें पॉजिटिव क्या हुआ कि लो वॉल्यूम पे कंसोलिडेशन आया और 2 बार निफ्टी 0.2% से ज्यादा गिरा, ठीक है, लास्ट वीक. बट डिस्ट्रीब्यूशन डे एक भी नहीं आया, देयर वाज नो डिस्ट्रीब्यूशन डे. सो सम ऑफ यू माइट बी न्यू इफ टुडे, देन डिस्ट्रीब्यूशन डे वी यूज्ड टू ट्रैक इट मार्केट टॉप. जब भी निफ्टी में 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन डे एक्यूमुलेट हो जाता है तो वहां से नो फर्दर रैली का चांसेस और यू कैन से प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. अभी डिस्ट्रीब्यूशन डे क्या है, 0.2% लॉस इन निफ्टी ऑन अ वॉल्यूम हायर देन प्रीवियस सेशन. 0.2% से ज्यादा गिरता है और वॉल्यूम प्रीवियस सेशन से ज्यादा होता है, देन यू कंसिडर इट एज अ डिस्ट्रीब्यूशन डे. सो लास्ट टाइम लॉस हुआ था 0.2% से ज्यादा 2 बार ही हुआ था, बट वॉल्यूम कम था प्रीवियस सेशन से. सो we have never got a distribution day. So current distribution day count is 0. So that's for the Nifty's chart. So 200 250 on the downside, and after that 18,000 18,050, and on the higher side the first important is 400 and then we go to 600. So that's how the setup for the indices are. रेंज बाउंड है अभी, तो थोड़ा एक रेंज के ऊपर नीचे हो तभी एक मेजर मूवमेंट दिख सकता है. On the news front, Zomato's co-founder resigned from the company. Then this is big one, the Tata Motor to replace Dr. Reddy in Nifty, S&P BSC Sensex 30 from December 19. Then IEX board will be considering a buyback proposal on November 25. And this one is mover that the government withdraws export duty on steel
एंड ऑल्सो पार्शियली किसी में रिमूव कर दिया, किसी में कम कर दिया स्टील प्रोडक्ट्स पे भी, विथ इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर 19। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। आई रिमेम्बर मई में जब ड्यूटी लगा था ना इस पे, तब सब सारे स्टील स्टॉक 10, 12, 15% गिरे थे, ठीक है। अभी ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो हट गई है, बट वन थिंग टू बी रिमेम्बर कि ऐसा नहीं है। सी देखो, सेंटीमेंट तो अच्छा ही है क्योंकि ड्यूटीज हटा दी है, इसकी वजह से वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे कंपनी के लिए, वो लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे, उनका मार्केट बढ़ेगा। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि प्राइसिंग में अगर देखें ना, तो अभी डोमेस्टिक प्राइस ऑलरेडी हाई है, एंड द प्राइस ऑफ द नो इन द overseas market is already a bit lower than the or you can say the notably lower than the domestic market. So ऐसा नहीं है कि प्राइस फ्रंट में या प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट में एबिटा बढ़ जाएगा, एबिटा एक्सपांशन हो जाएगा, ठीक है, वैल्यूएशन एक्सपांशन हो जाएगा, वो वाला सीन अभी नहीं दिखता है। सो दैट थिंग यू शुड हैव इन योर माइंड कि हाँ, वॉल्यूम बढ़ेंगे, इसका सेंटीमेंट इम्पैक्ट अच्छा होगा मार्केट पे कि चलो इम्पोर्ट ड्यूटी अभी हटा दी है गवर्नमेंट ने, बट ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट मार्केट में या फिर ओवरसीज मार्केट में उनको अच्छा दाम मिलेगा, उनका एबिटा बढ़ेगा, उनका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स बढ़ेंगे। So that is not a current scene. There are chances that in the future the prices might increase in the global market if चाइना वाला थोड़ा ग्रोथ वापस आ जाता है, उनका जो कोविड पॉलिसी है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, you see the prices coming higher in the China and the global market. In that scenario, again the profitability of the steel company will improve. But as of now, this thing to be remembered. The other news that the US home sales declined for the ninth consecutive month in October, and it was at 4.43 million versus 4.71 million on a month-on basis. Then Aarti Industry and Deepak Nitrate signed a binding term agreement for 20 years for nitric acid and Easemytrip to consider bonus issue on November 23. So these were some of the notable news. Now, if you look at the global markets, the Dow, S&P, Nasdaq. So Dow, S&P were up around 0.5, 0.6%. Nasdaq was flat. Today in the Asian market, Shanghai is down. Hang Seng is also down around 2%. Nikkei is flat and Kospi is down minus 1.2%. So you can see here there is a major fall, which is always good for the Indian economy. जो Brent crude है, the last week 96.7 तक पहुंच गया था. So now it's somewhere around 87 per barrel, dollar per barrel. And if you look at the USD INR, ये भी जो last month का अपना high था वो almost 83 तक पहुंच गया था. अभी वो 81.7 है. So any good, so these are some good momentum for the Indian economy क्योंकि 9500 में वो जो हम बात कर रहे थे ना लास्ट वीक, ये नर्वस 90 वाला स्टॉक अपनी इकोनॉमी को भी थोड़ा नर्वस करेगा if crude remains in that higher range. But now if it remains below 90, then it's always positive for our economy. Okay, the last part. So SGX Nifty indicates a negative opening, but हाँ वही range में है जो हम discuss कर रहे थे. Let's see how the market reacts in the opening hour. So the chart of the day for today, we have again selected West Coast paper for the chart of the day. So fundamentals are excellent. Look at the earnings growth. The revenue growth is decent. The number of fund holding is increasing. So last December end में 55 funds थे इसमें, अभी 9 महीने में बढ़ के 88 फंड हो गए जो सितंबर एंड तक का अगर हम देखें तो द फंड होल्डिंग इज एक्सेलेंट फॉर दिस स्टॉक और काफी इम्प्रूव हो रहा है। अगर जो डिमांड सिनेरियो है फॉर पेपर इंडस्ट्री, जो पहले रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम था वो थोड़ा अभी कम हो गया है, ठीक है। डिमांड इज स्टिल हायर फॉर द पेपर कंपनीज एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एलिवेटेड इन द कमिंग ईयर ऑल्सो, ठीक है। अगर टेक्निकल सेटअप की बात करें देन द सेटअप इज एक्सेलेंट। एवरी टाइम इट इज आफ्टर गिवन अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट अच्छा मूव दिया है। यहाँ पे कैन फॉलो माय एनोटेशन, कंसोलिडेशन बेस से ब्रेकआउट दिया, मोर देन 25-30% का रिटर्न दिया विद इन अ मंथ, ठीक है।
फिर यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया, फिर से ये तो ऑलमोस्ट 70-80% का रिटर्न दिया था यहाँ से तो विद इन 2 months. नाउ इट इज अगेन फॉर्मिंग अ कप विथ हैंडल बेस, ठीक है, एंड हैंडल पे ये लो वॉल्यूम था, देखो लास्ट वीक जब गिरा था तब लो वॉल्यूम था, फ्राइडे को फिर से थोड़ा वॉल्यूम ऊपर आया। सो अभी ये हैंडल के जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे मार्केट भी कंसोलिडेट कर रहा है। सो यहाँ पे जब ब्रेकआउट होता है then the ideal buy zone will be from 0 to 5% from here, that is 625 से लेके 5% इसका ideal buy zone रहेगा। अदरवाइज द सेटअप फॉर द स्टॉक इज वेरी गुड। RS का अगर देखो 88 का है, मास्टर स्कोर इसका 85 का है, EPS इज गुड। सो जो सारे ओनियन रेटिंग्स है, ग्रुप रैंक भी ऑलमोस्ट 43, yes, out of 197. So the technical fundamental growth story, all the three things are working well for the West Coast paper. So that's it for the today's session. Thank you for joining. See you again at 4:30 in the evening, and we'll discuss what happened in the markets today.